she's the backbone of Navjeevan Prayas. It is her dream that we are all trying to help her with. As she told you, that she's basically, we are trying to work for the environmental sustenance and sustainability development goals set up by United Nations. और ये सब चीज़ों के बारे में, what happens is that we do a lot of discussion in forums. I remember I was very recently at a conference which was organized by Beyond World India One News, which is our own channel, which is talking about national news. And we had, Doctor, we had a lot of ambassadors and everybody talking about it. And they are all talking about how to make the world carbon neutral. और ये discussion अब बहुत साल से हो रहा है, actually 5-10 साल से हो रहा है. It is now that it is gaining momentum. पहले it was happening like a good to talk. अभी भी वैसे काफी good to talk की तरह ही होता है कई बारी. So मतलब we talk about it, but we don't change anything in ourselves. That is how it is sometimes done. In fact, बहुत interestingly, sometimes I say कि the way we look at it is कि भाई हमने तो खराब किया नहीं, तो हम क्या करें? और हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करें? पर भाषण दे सकते हैं तो भाषण दे देते हैं. That is the kind of attitude with which many times we are dealing with this issue of sustainability. But I think it is gaining importance. There are youngsters who are kind of now getting aligned to it. We have people like Anshul, who's been an environmentalist, who have started to work with it because they see उनका फ्यूचर बहुत खतरे में आने वाला है. हम लोगों को तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 साल 25 साल निकल जाएंगे, शायद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद वालों का जीवन थोड़ा खतरे में ज़्यादा है. So I mean, I think we all know why we talk about environmental sustainability, etc. How many of us are aware about all of this कि हमारे वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे वाटर लेवल बढ़ रहे हैं, but I don't know whether we really feel anything about it, whether it is just news for us or whether we actually feel we are in any danger. वो पता नहीं मुझे, मतलब मुझे तो नहीं लगता था कि मैं खास डेंजर में हूँ. आज से कुछ साल पहले मेरे लिए it was a news, ड्रामा है, तो हो रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है. In fact, it was also positioned at one point of time in a manner कि यूरोप अपना धंधा बढ़ाना चाहता है, they want to do more business. That is why they talk about all of this so that they can push their technologies. That was kind of, this thing that people used to feel कि भाई ये third world countries हैं, अब ये जो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह लाएंगे उसमें बिकॉज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट नहीं होगा और ये सब बाकी काम कर चुके हैं, तो नाउ दे आर मेकिंग द वर्ल्ड अ फूल बाय टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज दैट दे कैन ब्रिंग इन. दैट इज द काइंड ऑफ थिंकिंग और पोजिशनिंग दैट आई यूज्ड टू गेट a few years back, but I think now it has become a real threat. और दिल्ली वालों को तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरह पता है it is a real threat, because जब हम वो गैस चैम्बर में थोड़े दिन रहते हैं 2 महीने, तो हमें समझ में आने लगता है कि एनवायरनमेंट की वैल्यू क्या है. वो जो 900 ppm में जब सांस नहीं आता और जब अस्थमा वाले पेशेंट आपके पास बढ़ जाते हैं और सब होने लगता है, तो आई थिंक द थ्रेट becomes closer and more real. So हमारा जो the whole initiative, and by the way I was attending this seminar along with Prime Minister Modi and Sadhguru recently at Vigyan Bhavan, and Sadhguru is talking today about soil conservation. I don't know how many of you know it, but हमारे ये भी बोलने लगे हैं आप कि soil भी सिर्फ 60-70 साल ही उपजाऊ रहने वाली है. It is not going to be fertile for long. If we don't do anything, if we keep using the way chemicals etc. that we are using, then the soil is going to be becoming infertile, which basically means no food. Our rivers, of course, we know are polluted beyond imagination. I was in Varanasi yesterday, day before. And I was talking to somebody who does a lot of work on Ganga cleaning, and there is a huge problem because we keep pumping a lot of waste
into our rivers directly. And एक तरफ क्लीन करते रहते हैं, दूसरी तरफ उसमें सीवेज और वो सब केमिकल्स डालते रहते हैं। और जब पॉलिसी की बात करो तो एक एक्स बड़े लेवल पे पॉलिसी की बात होती है, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो कहता है मेरा वाला डाल लेने दे यार, मेरा वाला कूड़ा डालने दे, मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। So he keeps flouting the norms. So that is the kind of situation. But Sadhguru has taken this up, and he was traveling to, I think many of you may be knowing this, he has traveled across the world on his motorcycle, and he has touched about 2.6 billion people in this whole journey, with only one message, that we need to save our environment, save our soil, etc. So it is gaining importance. So I think all of us need to now look at it at a far closer level. And I did mention about this conference not only to talk about Sadhguru, but Prime Minister Modi said something that day, and you can probably go and check back the video, YouTube video. You will be able to find that out. Save soil. Say save soil. Prime Minister Modi, you will find the video. He said that we should be concentrating on institutions, on hospitals, on educational institutions, if we really want to bring about change. So basically he talked about biodigesters, by the way, he talked about biodigesters from there. And because at that level, if you do certain things, then things will probably... Do we understand, by the way, what is carbon neutrality? A little bit I will, but क्योंकि हम ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, और मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है, मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग करता हूँ, I run a management consulting firm, and many times we use a lot of words without understanding them, so they are just words. हम शब्द बोलते हैं और उसको कहीं जहन में समझ नहीं पाते और फिर भी सब बोलते रहते हैं. So carbon neutrality is that basically the amount of carbon that we are emitting, कोई भी चीज करने से जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में कार्बन कंटेंट को बढ़ाता जा रहा है. सो दी कार्बन न्यूट्रलिटी इसकी ऐसा करें कि जितना कार्बन दें, जितना कंज्यूम करें उतना दें, जितना कंज्यूम करें उतना ही दें. हर आदमी हर चीज जितना कंज्यूम करे, हर एक्टिविटी जितना कंज्यूम करे उतना दे, मतलब उससे ज्यादा ना दे. जितना उसने कंज्यूम, जितना वो दे रही है उससे ज्यादा. So it should be all balanced. That is the kind of concept when we talk about carbon neutrality. Now carbon neutrality has got several fold this thing, because carbon neutrality में जितनी भी हमारी एनर्जी, अभी तो हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी, सारी एनर्जी. फॉसिल फ्यूल मतलब ओक से, कोयले से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, उससे सारी एनर्जी हम लोग बनाते हैं. तो उसमें से जो एमिशन होता है, that is not carbon neutral, because you are actually putting back a lot of stuff. जबकि बायोगैस वगैरह जो कई चीज़ें हैं उसमें जो डाइजेस्ट करने के लिए कार्बन यूज होता है उतना ही कार्बन वो जलने में वापस देता है. तो इट हैज ऑलरेडी टेकन कार्बन, इट हैज एब्जॉर्ब्ड कार्बन फॉर डूइंग द कन्वर्शन. ऐसे ही कंपोस्ट बनने में इट हैज टेकन कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू गेट कन्वर्टेड टू कंपोस्ट. दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी. दूसरा कार्बन न्यूट्रलिटी का एस्पेक्ट ये है कि जितना भी हम ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, जितनी भी चीज़ें करेंगे उसमें डीजल लगेगा, उसमें पेट्रोल लगेगा. सो आई वाज डूइंग अ बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन, क्या कहते हैं उसको, बैक पर रहे जिसे बोलते थे हम, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा बनाया, मतलब कि हाउ वी कैन दिस थिंग. सो वी से दैट अबाउट 1 ton ऑफ वेस्ट, हमारे यहाँ वेट वेस्ट बहुत क्रिएट होता है हॉस्पिटल्स में, या जहाँ पर भी बहुत लोग इकट्ठे रह रहे हैं वहाँ पे वेट वेस्ट बहुत क्रिएट होता है. वेजिटेबल मार्केट्स के आसपास वेट वेस्ट बहुत क्रिएट होता है. वेट वेस्ट मतलब जो वेजिटेबल्स का, खाने के प्रोडक्ट्स का, इनका जो वेस्ट होता है, दैट इज वेट वेस्ट, राइट. आई मीन
Anshul, you can correct me if there is anything that I say which is wrong, because you are the environmental expert, and so is Raghav. He has done a lot of work on this side. So 1 ton wet waste से we get about 20 meter cube to 80,000 meter cube of biogas बन सकता है 1 ton waste से, which means about 20,000 to 80,000 liters of biogas बन सकता है 1 ton waste से. चलो ये तो एक बात समझ में आई. अब सवाल ये कि 1 टन वेस्ट कैसे होता है. तो आई वाज जस्ट डूइंग अ बैक ऑफ द हैंड कैलकुलेशन कि अगर 1000 लोग हों और 100-150 ग्राम वेस्ट अगर वो रोज़ का प्रोड्यूस हो उनसे, जो कि शायद हो जाता है जब हम कुछ भी करते हैं, आलू के छिलके, बनाना के छिलके, संतरे के छिलके, whatever, you know, or a lot of waste which is happening from leaves, from a lot of other things, that is wet waste. So 100-150 gram per person I think we produce on a daily basis, and that amounts to about 50 tons of wet waste per year. So, and that then amounts to 5,000 tons per lakh of people. अगर 1 लाख लोगों पे करीबन 5,000 tons of waste produce हो जाता है एक साल में. And if you do the maths, you will find out कि इतना छोटा सा करने से भी 1 लाख लोग about 5,000 tons of wet waste produce कर लेते हैं. So, which basically means कि अगर इस 5,000 टन को हमें डिस्पोज करना पड़े मतलब यहाँ से ट्रक जाए, कहीं पर लेकर जाए, जो कि होता ही है नॉर्मली. जब आप लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल टू द बाईपास इन दिल्ली? सब, एवरीबडी, राइट? वो जो हीप है वहाँ पे इतना बड़ा, which is becoming bigger and bigger and bigger. So all the waste goes there, right? So there is somebody who's doing those trips. So यहाँ से मेरे ख्याल 30-40 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से एक साइड में. So fundamentally अगर आपको 5,000 टन करना है तो करीबन 10,000 ट्रिप्स करने पड़ेंगे. आधा टन एक बारी में जाएगा. 5,000 ट्रिप्स करने पड़ेंगे, and it will be roughly about 5 lakh kilometers which will be done for doing this. So they add up, numbers just add up. जब 100-150 ग्राम देखते हैं तो थोड़ा लग रहा होता है. जब जैसे ही उसे add up करने लगो, it becomes a very large number, and it will become, which will consume about 1 lakh liters of diesel. 1 lakh liters of diesel per lakh people to dispose the waste, right? So doing the maths further, it becomes 1 crore of rupees of diesel per year per lakh of people. मतलब 1 लाख लोगों का waste disposal के लिए we are spending that kind of money. And of course, when you do it for 100 crore people, then it kind of, you can do the maths further. So what it essentially means is कि बहुत छोटे steps से भी काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है. So at Navjeevan Prayas, we have taken upon ourselves that we will put up composters and going forward biogas digesters. We have very recently tied up with Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology.